Good evening, friends. Welcome to Dubai Institute for Judicial Services. So, with effect from today, we are coming up a, with a very interesting series wherein we shall be focusing upon certain conceptual underpinnings of different topics touching upon different subjects of law. My other colleagues will also be, taking in some important lectures touching upon these, essential concepts of a particular subject. So, since my, area of expertise will be constitutional law as well as some species of mercantile law. So, today I have decided to come up with an interesting video on mercantile law. The purpose of this series is to apprise you about some essential concepts related to a subject of law, which we often tend to ignore because our focus is mainly on, bare provisions of law, which are laid down in bare acts. But we tend to ignore the conceptual understanding of a particular subject and its consequences that we end up faring very low when it comes to writing effective answers for main examination or for that matter appearing for interview. So, the purpose of this series is to enrich your conceptual understanding of a subject of law. Suppose, if I talk about constitutional law, then of course it becomes very pertinent for a law student or for that matter a judicial aspirant to at least know about the concept of constitution, why a constitution is written, and what if a country is without a constitution, what consequences will it ensue for that particular state which is without a constitution, or similarly for that matter there are similar questions can be asked with regard to other subjects of law. Suppose if I'm taking about contract act, then a very pertinent questions would be asked that if contract is an agreement enforceable by law, then the question rises, do we call all kind of agreements contracts, or contracts are only those agreements which are ultimately enforceable by law, right? What if we have agreements touching upon sundry matters like social agreements or domestic agreements, uh, you know and if someone does not honor his or her promise with regard to that social agreement, what consequences will it follow in a court of law? So my purpose is basically to apprise you about certain basic understanding of a particular subject of law, right? Because we tend to ignore most of the time you know the finer nuances in a particular concept जो कि law को समझने के लिए बहुत जरूरी है. So that is the purpose of bringing up or coming up with this interesting series on different subjects of law. Today I shall be touching upon mercantile law, जो कि हम understand करते हैं in the sense of so far as our judicial syllabus is concerned, in the form of Indian Contract Act, in the form of Sales of Goods Act, in the form of Partnership Act, and in some other states judicial services syllabus we do have Arbitration Act, we do have Companies Act, right? And Negotiable Instruments Act, and so on and so forth. But here being very specific to Punjab and Haryana judiciary exam, I shall be focusing upon three species of mercantile law that is prescribed in our syllabus. That is Indian Contract Act 1872, Sales of Goods Act, right, 1930, and Indian Partnership Act 1932. Okay, but इससे पहले कि हम इन
सेपरेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ को टेकअप करें, let's understand in today's video, let's understand what is mercantile law in the first place. Mercantile law किसको कहते हैं? Since mercantile law अगर हम बोलें, so it's a it's an umbrella term and it embraces many subjects, or statutes or laws, which deal with different facets of trade, commerce or industry. ठीक है, राइट. इनफैक्ट जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए जितने भी हमने लॉज बनाए हैं हमारे देश में जो अप्लाई होते हैं, राइट, उन सबको मर्केंटाइल लॉ की कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाता है. Okay, and most important species of mercantile law, in fact, that is called as Contract Act. That's the Indian Contract Act, because it is the mother of all mercantile law. After all other species of mercantile law, they derive their validity from the basic Indian Contract Act. After all, चाहे हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें, उसमें भी इवेंचुअली हम एक कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं. अगर हम पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हम अल्टीमेटली एक कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की बात करें, उसमें भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं. तो राइट, ब्रॉडली, ठीक है, इफ आई विल बी आस्क्ड टू ड्रॉ एन एनोलॉजी ऑफ मर्केंटाइल लॉ, तो मैं ऐसे कहूंगा कि एक बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल आ गया मर्केंटाइल लॉ, और उसके अंदर there are different concentric layers of circles, जिसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डालेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डालेंगे, पार्टनरशिप एक्ट डालेंगे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डालेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट डालेंगे, एंड सो ऑन. राइट, तो मर्केंटाइल लॉ ब्रॉडर स्पीसीज है, ब्रॉडर जीनस है, राइट, और उसके अलग अलग स्पीसीज है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लॉ, राइट, जिनको हम कॉमनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट या आर्बिट्रेशन एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट की फॉर्म में समझते हैं. तो सबसे पहले यही क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ. तो नाम से पता लगता है, as the name indicates, mercantile law is a law which deals with broadly three matters, that is called as trade, right, trade, commerce as well as industry. इन तीन मैटर्स को जो लॉ कवर करता है, और इन तीन मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ अप्लाई होता है, ठीक है, इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे हम दुनिया के किसी भी देश की बात करें, वहां भी अपने अपने मर्केंटाइल लॉ है. ठीक है, और हमारे देश का अपना मर्केंटाइल लॉ है. इनफैक्ट हमारे देश का जो मर्केंटाइल लॉ है, इसका सबसे बड़ा सोर्स ब्रिटिश मर्केंटाइल लॉ ही है. बट हम सिर्फ अपने देश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम मर्केंटाइल लॉ में ये सभी लॉज पढ़ेंगे, राइट, जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता है, पार्टनरशिप आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आता है, आर्बिट्रेशन. सो इन सिंपलर टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि मर्केंटाइल लॉ, राइट, इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ व्हिच डील्स विद इंडस्ट्री, कमर्स एंड ट्रेड. राइट, दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, राइट, कि मर्केंटाइल लॉ क्यों बनाया गया? What was the scenario in these matters, right, trade, commerce and industry, before the enactment of a unified mercantile law? ठीक है, या सेक्युलर मर्केंटाइल लॉ. इससे पहले क्या सिस्टम अप्लाई होता था इन तीन मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए? दैट इज ट्रेड, कमर्स एंड इंडस्ट्री. राइट, सो इफ वी गो बैक इनटू द हिस्ट्री, तो हमें पता चलता है कि prior to the enactment of mercantile law, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना 1872 में, उससे पहले ये ट्रेड, कमर्स और इंडस्ट्री जितने भी रेगुलेट होती थी, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो ये पर्सनल लॉज के बेसिस पे रेगुलेट होती थी, पर्सनल लॉज ऑफ द पार्टीज. ठीक है, और पर्सनल लॉज आपको पता ही है, दीज आर बेसिकली कस्टमरी लॉज, उसके बेसिस पे रेगुलेट होती थी. और बड़ा ही एक जिसे कहते हैं कि वियर्ड सिस्टम अप्लाई होता था टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इन द मैटर्स ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट, या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के जितने भी डिस्प्यूट राइज होते थे, तो
उसमें एक ऐसा सिस्टम बनाई होता, बिकॉज देयर वाज नो सेक्युलर और यूनिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ टू रेगुलेट दिस मैटर्स। तो उसमें क्या किया जाता था कि जो पर्सनल लॉज है पार्टीज के वो अप्लाई किए जाते थे। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर पार्टीज टू ए पर्टिकुलर डिस्प्यूट, हम कमर्शियल डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, राइट, या मर्केंटाइल डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, अगर पार्टीज हिंदूज हैं, ठीक है, तो हिंदू का पर्सनल लॉ अप्लाई किया जाता था with regard to that particular aspect or that particular dispute. अगर एक पार्टी हिंदू है या दूसरी पार्टी मुस्लिम है, राइट, तो डिफेंडेंट का लॉ अप्लाई किया जाता था। सपोज इफ हिंदू इज अ डिफेंडेंट, तो हिंदू का पर्सनल लॉ अप्लाई किया जाएगा उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, एंड इफ द डिफेंडेंट इज अ मुस्लिम, देन मुस्लिम का पर्सनल लॉ अप्लाई किया जाएगा, राइट। एंड इफ बोथ द पार्टीज आर मुस्लिम, ठीक है, ठीक है, अगर दोनों पार्टी कमर्शियल डिस्प्यूट में मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम का पर्सनल लॉ अप्लाई किया जाता था। एंड टू ऐड फर्दर टू द कंफ्यूजन, अगर राइट जो पार्टीज है डिस्प्यूट की, ठीक है, दैट इज टू पार्टीज इन ए कमर्शियल डिस्प्यूट, अगर वो ना ही हिंदू है ना ही मुस्लिम है, बट किसी और रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, से फॉर दैट मैटर क्रिश्चियन है, तो फिर कैसे डिस्प्यूट किया रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस, राइट, इसलिए इतना ज्यादा कंफ्यूजन था। इन दैट केस, राइट, क्या किया जाता है, तो ब्रिटिश का जो मर्केंटाइल लॉ है, ठीक है, जब ब्रिटिश जो लॉ के प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस को लेके, उनको अप्लाई किया जाता है रिजॉल्व करने के लिए। इट वाज ए वेरी confusing system because on the first hand it was a non-secular law because law has to be secular in the first place, और इसमें कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं थी, कोई रैशनैलिटी नहीं थी, ठीक है। अगर पार्टी हिंदू है तो हिंदू का पर्सनल लॉ अप्लाई किया जाए, ठीक है, अगर पार्टी मुस्लिम है, ठीक है, तो मुस्लिम का पर्सनल लॉ अप्लाई किया जाए। इट वाज एडिंग कंफ्यूजन एंड इट वाज practically difficult to do trade, commerce, or run an industry or commercial enterprise at that point of time. Therefore, in the midst of all this controversy, okay, and in this confusion, right, a need arose that let there be a unified system of law that would be uniformly applied to all the communities, irrespective of the fact that whether they are Hindus or they are Muslims, they are Christians, okay, right? There has to be a simple, single unified system of law, rather uniform system of law, right? जो कि सेकुलर हो और सभी पार्टी irrespective of their religious affiliation उसको equally apply हो. That's why, keeping in view this felt need for having a uniform and secular system of law, okay, in the matters of business transactions, business, trade, or industry, right? The mercantile law was enacted, और उसी मर्केंटाइल लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ इनेक्ट किया गया, दैट वाज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड लेटर ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज ए वेरी टू बिगिन विद इट वाज a very comprehensive law. इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी उसका पार्ट था, पार्टनरशिप एक्ट भी उसका पार्ट था, बट लेटर ऑन, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देन लॉ कमीशंस, जिन्होंने रिकमेंड किया कि लॉ हैज the commercial transactions, especially in sales of goods matters और पार्टनरशिप में काफी चेंज हो चुकी हैं, काफी चेंजेस आ चुकी हैं, एंड देयरफॉर इट इज pertinent to separate sales of goods act as well as partnership act from the Indian contract act, ठीक है, तो इसलिए इनको सेपरेट कर दिया गया, बट पहले एक ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, राइट, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना, फिर उसके बहुत से स्पीसीज ऑफ मर्केंटाइल लॉ विद द पैसेज ऑफ टाइम अलग अलग कानून की फॉर्म में एनेक्ट होते गए, बट ये सिनेरियो था, कहने का मतलब कि मर्केंटाइल लॉ क्यों बनाया गया। इससे दो क्वेश्चन राइज होते हैं कि मर्केंटाइल लॉ क्यों बनाया गया, और मर्केंटाइल लॉ आने से पहले बिजनेस या ट्रेड कैसे होता था, ठीक है। तो हमने ये क्या आंसर किया कि पर्सनल लॉज के ऊपर बेस होता था, पर्सनल लॉज के बेसिस पे ये डिसाइड होता था। तीसरा एंड लास्ट क्वेश्चन जो हम आंसर करेंगे कि
ये मर्केंटाइल लॉ जो है इसके सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से आया, सो फार एज स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ इसके क्या क्या सोर्सेज हैं। तो हम ब्रॉडली इन सोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा मर्केंटाइल लॉ है, ठीक है, ये सबसे पहले तो ब्रिटिश मर्केंटाइल लॉ से इंस्पायर हुआ। इनफैक्ट बहुत से प्रोविजंस, बिकॉज वी वर अंडर ब्रिटिश डोमिनियन फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, तो इसलिए ब्रिटेन का जितना भी लॉ है, राइट, मर्केंटाइल लॉ जो ब्रिटेन में चलता था, राइट, वही इंडिया में अप्लाई किया गया, उसी से हम इंस्पायर हुए। और ठीक है, इनफैक्ट बहुत से प्रोविजंस तो हमने डिट्टो रेप्लिकेट किए हैं इंडिया में, ठीक है, विद माइनर डिफरेंसेस कीपिंग इन व्यू द पेक्यूलियर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन इंडिया, ठीक है। बहुत से प्रोविजंस हमने डिटो कॉपी की हैं, बट कुछ को हमने इंडिया की कंडीशंस हमने उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी हमारी पार्लियामेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्होंने इंडिया में इंडियन स्पेसिफिक सिचुएशंस को देखते हुए कुछ ऐसे प्रोविजंस मॉडिफाई करके अप्लाई की हैं। अदरवाइज सबसे बड़ा सोर्स हमारे देश में जो मर्केंटाइल लॉ का है वो है ब्रिटिश मर्केंटाइल लॉ। दूसरा सोर्स उसी वक्त की बात करें तो स्टैच्यूट लॉ, स्टैच्यूट जो कि लेजिस्लेचर, स्टैच्यूट कहते हैं लॉ जो लेजिस्लेचर बनाता है, जैसे उस वक्त के इंडियन लेजिस्लेचर में, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल लेजिस्लेचर कहते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया 1872 में। इनफैक्ट जितने भी लॉज हमारे देश में अप्लाई होते हैं अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज द हैंडीवर्क ऑफ आवर ओन पीपल, हमारे जो नेशनलिस्ट या फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने संविधान लिखा, बट बाकी तो जितने भी हमारे देश में लॉज अप्लाई होते हैं या हो रहे हैं आज की डेट तक भी, these are all right colonial creation, ये colonial times के बने हुए हैं, right, and probably this is the time that the present government has decided to bring in through three criminal laws by replacing the colonial laws of 1860, like Indian Penal Code, like Criminal Procedure Code and Indian Evidence Act, and that's why they have re-christianed them with Indian names, राइट। सो कहने का मतलब मेजॉरिटी ऑफ लॉज, तो दूसरा सोर्स है मर्केंटाइल लॉ का जो इंडिया में, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूट लॉ, और उसमें स्टैट्यूट का मतलब जो एक्ट लेजिस्लेचर द्वारा पास होके आगे कानून बनाया जाता है, और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, हम स्टिल अभी भी हम कॉलोनियल टाइम की बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि विद आफ्टर द independence or after the commencement of our constitution, many these laws have been amended in order to bring them in conformity with the provisions of the constitution, because हमारा संविधान एक्सप्रेसली कहता है कि कोई भी लॉ, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ठीक है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट इनकंसिस्टेंट हो नहीं सकता, बट अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है एंड एनी प्रोविजन ऑफ दैट लॉ इज in derogation of the fundamental law of the land, that is constitution, then it has to be amended in order to bring that law in conformity with the constitutional law of the country, otherwise it shall be declared null and void. तो बहुत से चेंजेस हुई है विद द पैसेज ऑफ, बहुत सी अमेंडमेंट्स हुई है, बट स्टैट्यूट लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है मर्केंटाइल लॉ का इंडिया में, और जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की एग्जांपल ले सकते हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की एग्जांपल ले सकते हो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की एग्जांपल ले सकते हो, राइट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की एग्जांपल ले सकते हो, देन कंपनीज एक्ट की एग्जांपल ले सकते हो। ये जितने भी लॉज हैं ये स्टैट्यूट में बनाए हैं, ये पूरी बॉडी जो लॉज की है ये इंडिया के मर्केंटाइल लॉ को फॉर्म करती है, जो कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है। तीसरा सोर्स जो है दैट इज कस्टम्स, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, कस्टम एंड यूसेजेस, क्योंकि पुराने जमाने से जो ट्रेड हमारे देश में होती आई है, ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन सेवरल कस्टम्स एंड यूसेजेस जो चलते हैं। तो हमारे मर्केंटाइल लॉ में या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ या सेल्स ऑफ गुड्स में आप क्लियरली पढ़ोगे कि इट विल नॉट अफेक्ट द कस्टम एंड यूसेजेस, ठीक है, अनलेस दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। तब तक जब तक वो एक्सप्रेस प्रोविजन को वायलेट नहीं करते, तब तक कस्टम और यूसेज के बेसिस पे जो ट्रेड या कॉन्ट्रैक्ट हुए करते थे उनको वैलिड माना जाएगा। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
या दूसरे मर्केंटाइल लॉ जो हैं वो कभी भी कस्टमर यूसेजेस को डिस्कार्ड नहीं करते, वो कहते वो राइट वही चलते रहेंगे अनलेस दे आर एक्सप्रेसली अगेंस्ट द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ these enactments, yeah, these statutes, right? And fourthly, very important source of law, mercantile law in India is जुडिशियल जजमेंट्स, जिनको जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई जजमेंट जुडिशियल द्वारा दी जाती है तो फिर वो एक प्रेसिडेंट बन जाती है फॉर द कोर्ट्स which are subordinate to the court which has laid down that particular judgment, or even for the coordinate benches as well. Suppose any judgment on commercial law or commercial dispute given by our Supreme Court, then it becomes a precedent for all the high courts down the line. And if a high court has given any such judgment, then it is binding upon all the subordinate courts, right, which are below the high court. इसी को कहते हैं precedent. ठीक है, तो जुडिशियल जजमेंट या प्रेसिडेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ इन इंडिया। ठीक है, राइट। सो ये आज के टॉपिक में मैं आपको थोड़े बहुत कंसेप्चुअल अंडरपिनिंग्स बताना चाहता था मर्केंटाइल लॉ, एंड यू कैन इजिली find the slides which are being supplied with this video, that is about about all the nitty gritties of this topic जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो लेट्स हैव ए glance about on this topic जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो मर्केंटाइल लॉ आप यहां से समझ सकते हो। ठीक है, और ओरिजिन एंड स्कोप का टाइटल है इस स्लाइड का या इस टॉपिक का। ठीक है, तो पहले हम बढ़ते हैं। स्कोप तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। ओरिजिन क्या है, व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ। ठीक है, वट एवर आई हैव नरेटेड अर्लियर उसी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ लॉ विच कंप्राइजेस लॉज कंसर्निंग ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ऐसी ब्रांच है जो तीन चीजों को डील कर रही है, दैट इज ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, राइट। और आपको पता है जितनी भी कॉमर्स और ट्रेड होती है या इंडस्ट्री चलती है, it is basically a result of contractual relationship between the parties. तो ultimately base mercantile law का contract ही है, agreement ही है। With an increasing complexity of a modern business world, the scope of mercantile law has enormously widened. आपको पता होगा मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड काफी चेंज हो गया, तो स्कोप ऑफ, ठीक है, मर्केंटाइल लॉ हैज इनॉर्मसली widened. आपकी आज की डेट में आप एग्जांपल ले सकते हो कि देयर यूज्ड टू बी टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स वर इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, पार्टीज के बीच में डॉक्यूमेंट साइन होता था। दो पार्टीज किसी पर्टिकुलर मैटर को लेके कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी होता था, बट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी पार्टीज टेंड टू रिड्यूस देयर एग्रीमेंट इनटू राइटिंग। आज की डेट में वही कॉन्ट्रैक्ट इतने चेंजेस होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज की डेट में वही कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, ई कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको नाम दिया जाता है, राइट। और दिस इज हाउ द बिजनेस और ट्रेड इज बीइंग रेगुलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ईमेल आ गया, राइट, एंड इवन दूसरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो तरीके हैं जिसके थ्रू हम नेगोशिएशन या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी यूज हो रहे हैं। तो that's why with the complexity of modern business world, the scope of mercantile law has enormously widened. It is generally understood to include the laws related to contracts. ये इसका mercantile to include the laws related to contracts, SOGA, that is Sales of Goods Act, partnership, companies, negotiable instruments, ठीक है, insurance and arbitration act। तो ये सारे जो लॉज हैं मर्केंटाइल लॉ में ही इंक्लूड होते हैं, राइट, फ्रॉम कंपनीज, इंश्योरेंस टू आर्बिट्रेशन टू, राइट, देखो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, दैट इज बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग के भी जितने लॉज हैं वो सारे मर्केंटाइल लॉ के ही पार्ट हैं। ओरिजिन ऑफ मर्केंटाइल लॉ, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रायर टू द इनैक्टमेंट ऑफ वेरियस एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग मर्केंटाइल लॉ,
business transactions were regulated by the personal laws of the parties to the suit. ठीक है, अगर बिजनेस को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो पार्टीज का जो पर्सनल लॉ है वो यूज किया जाता था डिसीजन अराइव करने के लिए बाय द कोर्ट्स. Personal laws, right? The rights of Hindus and Muslims were used to be governed by their respective personal laws, usages, and customs. And where both parties were Hindus, they were regulated by Hindu law, right? And if they were Muslims, then Mohammedan law was used. This is what I was discussing. ये कितना एक weird system था ये. Adding further to the confusion, in case where one party was a Hindu and other Muslim, the personal law of the defendant, the opposite party, was applied. So, opposite party, that is defendant का law apply होता था अगर एक पार्टी हिंदू है और दूसरी मुस्लिम है. अगर इसके अलावा पार्टीज किसी और रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं तो फिर और ज्यादा कंफ्यूजन है. फिर तो ब्रिटिश कौन सा इंग्लिश लॉ या इंग्लिश कमर्शियल लॉ या मर्केंटाइल लॉ यूज किया जाता था. इंग्लिश लॉ, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे. अब आ गया जी सोर्सेस ऑफ मर्केंटाइल लॉ. ठीक है, अगर पार्टीज, वो आपने याद रखना है कि अगर पार्टीज अदर देन हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं तो फिर क्या किया जाता था. इट वाज another confusion that in that case ट्रेड कॉमर्स का डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए ब्रिटिश मर्केंटाइल लॉ के प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता था अगर अवेलेबल है. ठीक है, या अगर कहीं हिंदू और पर्सनल लॉ साइलेंट है एक पर्टिकुलर मैटर को लेके तब भी ब्रिटिश मर्केंटाइल लॉ यूज किया जाता था उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए. दिस इज वाज द रीजन दैट नीड वाज फेल्ट दैट देयर मस्ट बी ए यूनिफॉर्म सेक्टर लॉ फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ सच कमर्शियल डिस्प्यूट्स. अब आते हैं लास्ट में सोर्सेस ऑफ मर्केंटाइल लॉ. I have already discussed English mercantile law is the most important source of Indian mercantile law. The superstructure of Indian mercantile law has been built upon English mercantile law. Right? Even today, despite the enactment of various statutory laws touching upon the field of Indian mercantile law, our courts still take recourse to the English mercantile law. ठीक है, बेशक इतने मर्केंटाइल लॉ के स्टैट्यूट्स हम बना चुके हैं, राइट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. स्टिल हमारे कोर्ट्स अगर किसी प्रिंसिपल या किसी पॉइंट को डिसाइड करने में उनको कंफ्यूजन होता है तो दे लिबरली मेक अ रिकोर्स टू ब्रिटिश या इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ. ठीक है, फॉर for clarity, for that matter, clarity gather, ठीक है, or seeking information. यानी इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ. सेकेंड, स्टैट्यूट लॉ, दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है, मैंने आपको बताया था स्टैट्यूट लॉ. द बल्क ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ इज स्टैट्यूट लॉ. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड द कंपनीज एक्ट 1956 are some of the instances of the statute law. ठीक है, देन इसके बाद इंश्योरेंस एक्ट, देयर आर सो मेनी एक्ट्स, ठीक है, जो कि हमारे पार्लियामेंट ने, ठीक है, या उस वक्त की हमारी जो पार्लियामेंट थी बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, उस वक्त भी जो जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर था, सेंट्रल लेजिस्लेचर, राइट, और वो भी पार्लियामेंट की तरह ही कानून बनाता था. उनसे हमारा मर्केंटाइल लॉ इंस्पायर, उनसे हमारा मर्केंटाइल लॉ बना है, एक्चुअली उन्होंने बनाया है, राइट. देन केस लॉ, जिसको मैंने आपको बताया था, जुडिशरी की जो जजमेंट्स होती हैं हमको केस लॉ कहते हैं, या उनको हम एक्चुअली प्रेसिडेंट पे कहते हैं. जुडिशरी डिसीजंस आर यूजुअली रेफर्ड टू एज द प्रेसिडेंट्स एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन लो टू दैट कोर्ट व्हिच गेव द जजमेंट. दिस इज व्हाट द कांसेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज. Whenever an act is silent on a point or there is an ambiguity, ठीक है, जहां कोई एक्ट किसी पॉइंट पे साइलेंट है, एक्ट मीन जो कमर्शियल लॉ का एक्ट है, ठीक है, या कोई एम्बिग्यूटी का मतलब होता है डबल मीनिंग है, ठीक है, देन द जज हैज टू डिसाइड द केस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस. अगर, ठीक है, किसी एक्ट के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है या हमारी कोर्ट्स
आज की डेट में भी ब्रिटिश मर्केंटाइल लॉ को रेफरेंस के लिए देखती हैं। अगर वो भी नहीं है, देन जज डिसाइड दैट पर्टिकुलर मर्केंटाइल डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। ठीक है, इक्विटी का प्रिंसिपल या गुड कॉन्शियस, उसका यूज करके जज साहब उस पर्टिकुलर मैटर को डिसाइड करते हैं। एंड फाइनली, custom and usage. Customer usage of a particular trade also guides the courts in deciding disputes arising out of mercantile transactions. ठीक है, but such a customer usage must be widely known, certain and reasonable, and must not be opposed to any legislative enactment. किसी तभी तो मैंने आपको बताया कस्टम और यूसेजेस, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है मर्केंटाइल लॉ पे। बट राइट, इवन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लो कहता है कि वो कस्टम जो ट्रेड के पुराने जिसके बेसिस पे ट्रेड होती थी वो बिल्कुल वैलिड माने जाएंगे, उनको उस बेसिस उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, उस बेसिस आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट दे मस्ट नॉट बी अपोज टू द लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट। तभी हमने बात की थी राइट कि कस्टम एंड यूसेज विल बी वैलिड अनलेस दे आर अपोज्ड or inconsistent with any express provision of an enactment या law। जब तक वो उसके अगेंस्ट नहीं है तब तक वो वैलिड माने जाएंगे। क्लियर? सो दिस इज हाउ। एंड फाइनली गाइस, लेट्स जल्दी करते, लेट्स डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन मेंस। तो इसलिए आई हैव फ्रेम्ड टू क्वेश्चंस हियर टचिंग अपॉन दिस टॉपिक just for the sake of your understanding of this topic and inculcating a habit to write down questions right from now onwards। अभी से आप क्वेश्चंस के आंसर लिखना शुरू कर दो। तो क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द टर्म मर्केंटाइल लॉ, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ, और इसको हमने इस टॉपिक में कवर किया। सेकंड इज ट्रेस द ओरिजिन ऑफ मर्केंटाइल लॉ, व्हाट वाज द सिचुएशन प्रायर टू द एनेक्टमेंट ऑफ मर्केंटाइल लॉ इन मैटर्स रिलेटेड टू ट्रेड, कमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, क्या सिचुएशन थी इससे पहले? दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आंसर्ड इन दिस टॉपिक, right? And it has been categorically even written in the slides also. So last, this is that you already know that our app that is called as Impriksha, which is available both on Android as well as iOS. So you shall be finding all these recorded videos, lectures along with PPTs in the form of PDF on this app. So it is high time that you must download this app so as to get seamless access to all these resources, right, from the web, right? So with this, we are done with today, and we shall be continuing with another interesting topic, okay, on contract act and other subjects of law in this series. Till then, thank you very much. Bye bye.